Hello students, I am Jasmine Faraz. Welcome you on my channel. We completed our all 10 practical problems and I hope समझ में आए होंगे. अगर नहीं समझे तो you have your own mobile. So mobile उठाओ और फिर से वीडियो देखो. Today I am going to teach you journal entry of this chapter. बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन था कि मैम जर्नल एंट्री कब पढ़ाओगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी है. अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा तो question number 2 and question number 5 they ask you to pass the journal entry. But once you understand the ledger clearly, to pass the journal entry it's very simple for you. So let's see how they ask the question. Now this is the question number 2. Already we have seen the ledger. We have to open 3 accounts: profit and loss account, then partners capital and the balance sheet. But sometime in board they ask instead of ledger pass the necessary journal entry. See here. We taught here ledger but now it's time to pass the journal entry. So we'll see all you have this ready-made solution already we have done. So please keep this solution with you because we have to pass the journal entry with these two accounts. Now why these two accounts? Because profit and loss adjustment account and the partners capital account is a ledger. Balance sheet is not an account. I always told you balance sheet is a statement. So we have to pass the journal entry with the help of these two ledgers. So be ready. We'll start. Now this is the total format. Journal entry in the books of firm. We have to pass the journal entry in the books of firm, not in the books of partner. Then you all know date column, particular, ledger folio, amount, one debit and amount credit. So this is your overall format of journal entry, all we have seen in 11th standard. Now what to do? Now see, this is your solution of question number 2. सब साथ में टेक्स्ट बुक नोटबुक लेकर बैठोगे. टेक्स्ट बुक तो नहीं रहेगा आपके पास लेकिन नोटबुक जरूर रहेगी और नोटबुक में ये सॉल्यूशन आपके पास रहेगा क्योंकि ये मैंने अपने वीडियो में सिखाया है. So this is your ledger. Now you will ask me, they say to pass the journal entry, then why we have to open the ledger? But to find out this profit, to find out this amount, we need to open ledger. हाँ, सिर्फ अगर उन्होंने जर्नल एंट्री पूछा है तो हम इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे. हम लोग ये रफ में वर्क करेंगे और हम लोग अच्छे से क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री लिखेंगे बिकॉज वी आर गेटिंग मार्क्स फॉर द जर्नल एंट्री नॉट फॉर द लेजर. बट रफ में तो आपको ये करना ही पड़ेगा तो ही आपको ये आंसर मिलेगा. देन सो विल स्टार्ट. नाउ आई विल गिव अ सिंपल ट्रिक. सी आपको कुछ दिख रहा है? कौन है ये? हाँ बताओ कौन है? बिल्कुल सही नहीं है. ये है एक जर्नल भाई साहब और एक है लेजर भाई साहब. सी देखो, आई पुट हियर क्रॉस, दैट मीन्स दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. जर्नल अगर बोलता है डेबिट लिखो तो भैया वो लेजर क्रेडिट लिखता है. अगर लेजर उसे क्रेडिट लिखता है तो जर्नल एंट्री डेबिट लिखता है. बस यही पिक्चर आपको आपके माइंड में रखना है और जर्नल एंट्री पास करनी है. विद इन 10 मिनट्स आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी. आपको ये जर्नल एंट्री याद रखने की जरूरत ना होगी. ठीक है. So we'll start. We have these two accounts. Now see, first we'll start with the partners capital because ये हम सब एडजस्टमेंट में करते. तो पहले एडजस्टमेंट नहीं होती है ना, पहले तो पोस्टिंग होती. तो हमने पोस्टिंग कहाँ से स्टार्ट की थी? यहाँ से. So balance brought down. Now remember that opening balance and closing balance never has a journal entry. ठीक है. तो इसकी तो भैया जर्नल एंट्री नहीं आएगी. See here. Now what left? जनरल रिजर्व. यस, दिस वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट. देखो आपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है इनके 3:2 रेशियो में. So now I will not explain this more because already I have explained my third or fourth video. So now this is the general reserve. What ledger said? ledger भाई साहब क्या बोल रहे हैं? This is the credit side. ledger, this is the credit side, no? And this is the debit side. So ledger जनरल रिजर्व क्रेडिट में लिख रहा है. लेकिन जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल साहब क्या बोलेंगे? नो, आई विल राइट दिस इज डेबिट साइड. सो फर्स्ट पुट अ डेट. डेट विल बी सेम 1 अप्रैल 2017. जिस दिन पार्टनर्स ने एंटर किया मिस्टर परेश ने, वही डेट पूरे जर्नल एंट्री में लिखनी है. ठीक है. सो नाउ
In ledger, general reserve is given credit side, but in journal entry we'll write debit side. See 20,000. 2. किसके इधर लिखा है हमने, कौन से अकाउंट में लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल. So who are the partners? To Amlendu capital account, to Samir capital account, being general reserve distributed. See general reserve, here credit, here debit. Done, understood? Now we'll move to C. ये हो गया. Now we'll move to this goodwill account. Now here goodwill they have given credit side. So while passing the debit side. So अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो यहाँ पे गुडविल ब्रिंग एंड विड्रॉ ये एंट्री दी थी, तो हम ये सब साथ में करेंगे. आपको पता है गुडविल ब्रिंग की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, सी 16,000. देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर Amlendu capital to Samir capital. See here goodwill comes credit side, but in journal entry it comes debit side. So this is a credit, but we'll write while passing the journal entry debit side. 2. कौन से दो अकाउंट में थी, we distributed among these two, Amlendu and Samir. So we'll write here Amlendu capital account and Samir capital account, being the goodwill distributed. Now we'll move to the next. They immediately said, if you read the first entry, immediately they said withdraw 50%, they withdraw. If you remember the second, goodwill bring and withdraw by the partner 50%. Now withdraw, that means now here cash where it is debit side. See ledger सब क्या बोल रहे हैं, ये debit में लिखो, but when we'll pass the journal entry it will go where, credit. So it will go credit here, and to whom we distributed, so who will become debit side, Amlendu capital and Samir capital account debit. If you apply the rule, we can see rule also. Now see, Amlendu and Samir are the receiver, so they comes debit side, and what goes from the firm, they withdraw the cash now, that means cash goes from the firm, so cash goes out. So this is the rule. Here also we can apply the rule, cash comes in, goodwill goes out. This all three entry already I have explained in my second video, treatment of goodwill. If you don't understand, again go watch my second video. So this is also over. See. Now next, what will come? Cash, bank. Now tell me, कौन सी entry है ये 20,000, remember? So if cash is credit, now while passing journal entry, where it will go? It will go debit. Here cash account debit 20,000 to which column we are writing here? Which column? Paresh capital. See up here is Paresh. It's not getting clear. Paresh. So we'll write here to Paresh. If we apply the rule, now according to rule, see, he bring the capital, Mr. Paresh bring the capital. So what comes? Cash comes. And who is the giver? Mr. Paresh is the giver. So see, if you apply the rule, again same entry will come. और अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आ रहा है, डेबिट क्रेडिट, बहुत सारे बच्चों को जर्नल एंट्री थोड़ी डिफिकल्ट जाती है, तो हमारी ये मेथड अच्छी है. जहाँ पे लिखा है उसके ऑपोजिट लिखो. सी हियर we have written here cash credit side, now we'll write here debit side. So this is done. So almost we finish this one. This is also done. Here finish, we finish this all. Now this entry will get after closing this. So now move to here. Now what will come? Now we'll start from here. Now this plant and machinery, furniture and RDD, all we can make a journal entry together. You can write separately also, but you get that much only mark. आप एक एंट्री पास करो या तीन अलग अलग एंट्री पास करो, आपको एक ही मार्क मिलेगा या 1.5 मार्क मिलेगा. So better we will pass common entry. So this all item are debit side. So what ledger is saying? Write debit side. But while passing the journal entry, what will happen? It will go credit side. See, I wrote here credit side. तो डेबिट में क्या आएगा? See या डेबिट में क्या आएगा फिर? Which account we are writing? कौन से अकाउंट में हम लिख रहे हैं? जैसे यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल लिखा था, इसलिए हर एक की एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल का नाम आया था. Now here we all have done this entry in this account.
So we'll write here profit and loss adjustment account. We make a total. It comes 9,200. I hope you are getting me. Done? So if we apply the rule, now see, plant and machinery, furniture, RDD, this value get decreased. Depreciation हुआ था ना सबका, so indirectly goes out, so it comes credit side. And profit and loss account is a nominal account. Debit all expenses and losses. So that is why here comes losses. I hope you are getting me. Being all assets and liability revalued. Now this is one type of liability. We cannot call as a liability, but it comes credit side. So we can call it liability. Sometimes here comes creditors also. So directly write being asset and liability revalued. Always write this only. Now this is done. See, we finish. Now move to this side. Buy land and building 10,000. Buy stock 4,000. Now what ledger said? See, ledger भैया क्या बोल रहे हैं? Write credit side. But while passing journal entry, it will go debit side, correct? If you notice the date comes same. So it go debit side, see here. See, they are opposite to each other. Journal entry write debit side, but this ledger write credit side. 2. Now what will write? कौन सा अकाउंट में हमने मेंशन किया है? Yes, so 2 profit and loss. If you apply the rule, अगर आपको रूल से समझना है तो सिंपल, लैंड बिल्डिंग गेट एप्रिसिएट, मतलब इनकी प्राइस बढ़ गई है, so indirectly comes in price increase. And profit and loss is credit. Profit and loss is a nominal account. Debit expenses and losses, and credit income and gain. Here they get the income. So profit and loss come credit side. So both way you can write the journal entry. You can apply the rule, और अगर rule आपका चक्कर सब उल्टा पुल्टा होता है अगर rule से, so don't worry, we have this method है हमारे journal साहब and ledger साहब, they will help out. Done? So this is also done. Now what left? Yes, now this is left. So this answer and this is the same. So either pass this entry or pass this entry. We'll pass this entry, already we distributed. तो हम ये एंट्री करते हैं, ये एंट्री करने की जरूरत नहीं क्योंकि दो सेम ही है, ये हमने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफर किया. अदरवाइज इफ यू पास दिस एंट्री एंड दिस एंट्री, so it will make double total. That will be a wrong. ठीक है, so we'll pass this. Now tell me, profit and loss adjustment account, where they have written credit side, but while doing the journal entry we'll write debit side. Here profit loss debit 4,802. To whom we distributed? Which account? Partners capital. Who are the partner? Amlendu and Samir. So see here, Amlendu and Samir. Then understood, being profit distributed. I hope you understand. We finish. Now if opening has no entry, then closing also has no entry. See, we all finish. Next comes balance sheet, but we never go to the balance sheet. Balance sheet is not an account. Balance sheet is a statement. So always while doing journal entry, open these two accounts only. And you have to open these accounts while passing the journal entry. Otherwise, how you will get this answer? ठीक है, तो आपको ये ओपन करना ही है. हाँ, सिर्फ रफ में कीजिए आप फटाफट, और ज्यादा टाइम इसमें, क्योंकि इसके लिए मार्क्स है. पर एंट्री 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स होता है. तो लास्ट ईयर इट हैज 10 मार्क्स. नाउ आई डोंट नो न्यू सिलेबस वाइज इसके मार्क्स कितने हैं, बट विल गो कि इसके 10 या 11 12 1-2 मार्क्स कम ज्यादा होगी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. मैंने आपको रूल वाइज भी सिखाया है और आपको ट्रिक वाइज भी सिखाया है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या अच्छा लगता है. अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज प्रेस कीजिए वो आइकन बटन, तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. जब जब मैं अलग कुछ एक्स्ट्रा कुछ वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.